Joining us now on India Today, आप हमारे साथ आज तक पर एक्सक्लूसिवली हैं सूरज पंचोली। सूरज, बहुत सारी बातें हुई आपके बारे में। बीजेपी के लीडर है नारायण राणे, उन्होंने भी ये बोला कि एक पूछा जाना चाहिए कि 13 जून को आपके घर में एक पार्टी हुई थी, वहां पे बहुत पावरफुल लोग थे। क्या जवाब है इसका? कौन थे आपके घर पे? क्या पार्टी हो रही थी? सुशांत सिंह राजपूत के साथ क्या कनेक्शन है? क्या वहां पे कोई बड़े पॉलिटिकल लीडर्स थे? बॉलीवुड के कौन कौन थे? ये आपको उनसे पूछना चाहिए कि उनको ये बात किसने बताया, क्योंकि नारायण राणे सर कह रहे हैं कि मेरे घर पे शायद से पार्टी हुआ था और मेरा कोई कनेक्शन है सुशांत की एक्स मैनेजर दिशा से या सुशांत से। तो पहली बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये सब जो न्यूज आई है या अफवाहें आई हैं, ये सिर्फ सोशल मीडिया के थ्रू आई है। ओके, जो भी आज फेसबुक पे लोग लिखते हैं या यूट्यूब पे लोग जो वीडियोस बना रहे हैं फ्रस्ट्रेशन में, वो न्यूज चैनल्स उठा के उसे आर्टिकल बना रहे हैं। ना मेरे घर में कभी कोई पार्टी हुई थी। ठीक है, एक मैसेज है व्हाट्सएप पे, हर जगह गया है। मुझे मेरे दोस्तों ने दुबई से, लंदन से, हैदराबाद से भेजा है कि सूरज के घर पे पार्टी हुई थी, सूरज के पेंट हाउस में पार्टी हुई थी, जहाँ पे सूरज ने सुशांत, दिशा, आदित्य ये सबको बुलाया था। विद आदित्य आई मीन आदित्य ठाकरे। सबसे पहले बात, मेरे पास पेंट हाउस है नहीं। आई लिव ऑन अ फर्स्ट फ्लोर इन वर्सोवा। ओके, the police are aware of me not being included or me not being attached to this case. I don't know why they're not saying anything. I don't know why Mumbai police is shut about this. They should be saying something about this. I don't care what Mr. Narayan Rane is saying. Okay, did Sushant's family say this? Is my first question. Did Sushant's father say this? Did Sushant's sister say this? Did Sushant's relatives say this about me, that I had anything to do with Sushant? कि मेरा क्या लेना देना था उसके साथ? I have been facing this humiliation for the past 8 years from my case now being attached to Sushant's case. क्यों? Why? I don't know why. Because these people who are talking about me and these big news channels who are naming me, what proof do they have? I have been in court since I was 21 years old. Today I am 29. Since 8 years, I have been trying to fight my battle in court legally. I have won 2 defamation cases against Rabia Khan, but she's sitting in London, is still giving interviews, but she has no courage to show up in court and fight the case against me. It is very unfair. I have had sleepless nights because of this. It's been 8 years. I am still struggling in this industry. Let me say it clearly. I still am. I am no Shah Rukh Khan's son. Yes, my father is a part of the industry. He had his time, but now it is my battle by myself. I don't have this kind of support people think I do. Yes, Salman sir did launch me, but after that, it was up to me to prove myself in the industry. But these people don't let me prove it because they have ruined my image. They have humiliated me. They have humiliated my family. They have sabotaged my image since the past 8 years, and now they are dragging me into Sushant's case for no reason. I have never met Disha Salyan in my life. May her soul rest in peace. Suraj, I have never met her in my life. एक काम करते हैं, पहले पीछे चलते हैं। आप बोल रहे हैं, पहली बात जो नारायण राणे ने बोला कि सूरज पंचोली से पूछा जाए कि 13 जून को उनकी पार्टी में कौन कौन था। आप बोल रहे हैं आपकी कोई पार्टी हुई ही नहीं 13 जून। सबसे पहली बात, मेरी कोई पार्टी ही नहीं हुई, ना मैं किसी की पार्टी में गया, मैं घर पे था। ओके, और उनसे ये बात पूछना चाहिए कि आपको सर ये बात किसने बताया है? क्या आपको ये व्हाट्सएप मैसेज आप पढ़ के बता रहे हो कि ये इस पे पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए कि some third person who is frustrated at home writing a WhatsApp message and sending it to today, you know what the WhatsApp messages are? ये WhatsApp मैसेज की मैं बात करता हूँ। आप सही बोल रहे हैं कि जो उन्होंने बोला प्रेस कॉन्फ्रेंस में वो बहुत थोड़ा मिलता जुलता है WhatsApp मैसेज से। उन्होंने बोला कि दिशा सालियान जो थी, जो अलेजिडली सुशांत सिंह राजपूत की एक्स मैनेजर, प्रेस में आया जब वो शी पास्ड अवे, वो बोल रहे हैं उनका रेप हुआ, मर्डर हुआ। व्हाट्सएप मैसेज में ये चल रहा है कि सूरज पंचोली उसके पीछे है, उनके रेप मर्डर के, और एक बड़ा पॉलिटिशियन जिसको आदित्य ठाकरे का नाम आ रहा है, उनसे जोड़ा जा रहा है कि भाई
इन दोनों ने मिलकर या किसी पॉलिटिशियन के साथ सूरज पंचोली ने मिलकर उसका रेप मर्डर किया, और ये बात दिशा ने सुशांत को बता दी थी, और सुशांत पब्लिक जाना चाहता था या इस बात से बहुत ज्यादा। मैं आपको बताता हूँ ये कहां से शुरू हुआ, ठीक है? जी जी। फेसबुक पे एक पोस्ट किया था एक आदमी ने जिसका नाम है पुनीत वशिष्ठ। ओके, पुनीत वशिष्ठ इज एन एक्टर. He has done a couple of films before. I keep seeing him in Juhu because I used to live there earlier. Okay. I mean, even if you cross Juhu every afternoon or evening, you'll see him outside next to the Marriott Hotel or whatever, okay, roaming around. So basically, this gentleman has written a big article on his Facebook. Okay, so he has written a 9-point synopsis where he has claimed in his head how he thinks this must have taken place. जहाँ पे उसने बोला सूरज का रिलेशन था दिशा से, सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, उसके बाद सुशांत को पता चला, फिर ये वो whatever it is. That is when I got scared. I'm like, what is this? Where is this entire article from Facebook going to? Leading news journalists are carrying this, leading papers, leading news anchors are talking about it. From a Facebook post, you take it to the biggest or one of the biggest channels on India, news channels on India. Is that how poor the journalism has become right now? अच्छा सूरज, आप हमारे आज तक के दर्शक भी देख रहे हैं तो आप हिंदी में एक बार बताएं। हाँ। पुनीत वशिष्ठ एक आदमी थे जो पुनीत वशिष्ठ ने आपके अगेंस्ट ऐसा क्यों लिखा? कोई आपकी दुश्मनी थी? मेरी उनसे कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है? ना मैं उनके साथ कभी काम किया हूँ, ना उनके साथ मेरी कभी इंटरेक्शन हुई है। उन्होंने ये मेरा कनेक्शन इसमें वही आर्टिकल से हुआ था जहाँ पे ही थॉट कि ये जो बॉलीवुड माफिया है, जो अभी ये माहौल बना है, ये जो बॉलीवुड माफिया है, ये है वो है। सूरज का अफेयर था दिशा से, सूरज ने दिशा को प्रेग्नेंट किया, फिर सुशांत को मालूम पड़ा, फिर दिशा मारी गई, फिर सुशांत मारा गया, उसमें बीच का कनेक्शन सूरज है। ना मैं दिशा को जानता था, सुशांत को जानता था मैं, पर उससे 1-2 बार मिला हूं मैं। एंड माय रिलेशन विथ हिम वाज वेरी नॉर्मल, वेरी कॉर्डियल, बिकॉज हम सेम इंडस्ट्री के हैं। हम कभी किसी के घर पे मिले हो या कोई ऑफिस में मिले हो तो हमने हमेशा हाय हेलो किया है। वहां से मेरी और सुशांत की थोड़ी दोस्ती हुई थी, जहाँ पे सुशांत ने मुझे उसकी फिल्म स्क्रीनिंग्स पे भी बुलाया है। तो मेरी सुशांत से कोई किसी भी तरीके की दुश्मनी थी ही नहीं। मैंने 2017 में एक आर्टिकल दिया था, एक ब्लाइंड आर्टिकल आया था मेरे और सुशांत के बारे में। तो मैंने उसका क्लैरिफिकेशन तब दिया था दैट देयर इज नथिंग बिटवीन सुशांत एंड मी। मैं और सुशांत एक दूसरे को भाई बुलाते हैं, मतलब वी कॉल ईच अदर ब्रदर। आई एम मच यंगर, ही कॉल्स मी लिटिल ब्रदर। वी हैव नेवर वर्कड टुगेदर एंड unfortunately we will never have a chance to work together now, but he respected me and I respected him too as my senior, and that's about it. दिशा, एक मिनट दिशा, मैं सुशांत की बात पूरी करूंगा, दिशा पे वापस आते हैं। दिशा सालियान को क्या आप जानते थे, कभी मिले थे? आपने मुझे बताया कि भाई मैं इसलिए बचा हुआ हूं, जब हमने बात करी, इंटरव्यू की, और आप बहुत घबराए हुए भी थे कि बड़े नाम है, लेकिन अगेन आपने ट्रस्ट किया आज तक और इंडिया टुडे पे। लेकिन मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं, आपने मुझे बोला कि मैं इसलिए बचा हुआ हूं सुशांत की, ना मेरी उस दिशा के साथ कोई फोटो है, ना ही मैंने उसको कभी फोन किया था, दैट्स व्हाई दे कांट प्रूव, और किसी को मुझे फंसा भी नहीं सकते। देखो, ये जितने भी बड़े लोग मेरा नाम ले रहे हैं, I challenge them today to prove it and show that I had any connection with Disha or her family. I don't have a number. I never had a number, nor has she ever contacted me, nor have I ever contacted her, nor have I ever met her in any place. Now they have taken my friend Sonakshi Raj's photo. Okay, I have a photo with Sonakshi, who's my friend. They have made that photo into Suraj and Disha Salian photo. मेरी कभी ना दिशा से इंटरेक्शन हुई है, ना कभी बात हुई है, ना कभी मुलाकात हुई है, ना कभी कोई कनेक्शन बना है, ना मेरी दिशा से, ना उनकी फैमिली से, ना उनके कभी कोई रिलेटिव्स। मैं जानता ही नहीं हूं या जानता ही नहीं था कि दिशा सालियान कौन है। May her
soul rest in peace. May her family rest in, have some peace right now. I have nothing to do. मेरा कुछ लेना देना नहीं है दिशा के साथ. And if Mr. Narayan Rane is saying, and if big news channels are saying, and if Puri Vasisht is saying, let them prove it. If they prove it, I am ready to face the consequences. But if I have nothing to do with this, is this fair? कि आप ये न्यूज पे चला रहे हो, व्हाट्सएप पे चला रहे हो, you are like giving me sleepless nights and giving me anxiety for no reason. Your relationship with सुशांत सिंह राजपूत, जब सुशांत की डेथ हुई थी, इमीडिएटली उसके बाद जैसे आप बोल रहे हैं बड़ी सारी थ्योरीज फ्लोट हो रही थी. उसमें ये बात थी कि आपका और उसका किसी पार्टी में, सुशांत का और आपका किसी पार्टी में झगड़ा हुआ. सलमान भी उनसे खफा थे, इसकी वजह से उनका करियर भी डाउनहिल गया और आप जो है उनसे बहुत थे और आपकी बिल्कुल आपस में बनती नहीं थी. मुझे ये बताएं, आप सुशांत से कब मिले थे पहली बार? किस तरीके के वो इंसान थे? आप कैसे याद करते हैं? सुशांत से शायद से मैं फर्स्ट टाइम आराम नगर में कहाँ मिला था. मैं वहां पे एक्टिंग क्लास करता था. शायद से सुशांत भी कोई फिल्म की एक्टिंग क्लास या कोचिंग या डिक्शन कर रहा था. वहां पे हाय हेलो हुई. उसके बाद सुशांत बहुत बड़ा स्टार बन गया. तो इधर इंडस्ट्री के लोग एक दूसरे को मिलते रहते हैं. कभी मैं जिम में तो नहीं मिला था उसको, याद नहीं आ रहा मुझे कहाँ पे, पर मेरी कोई दोस्त के घर पे कहाँ मैं मिला और वहां पे हमारी दोस्ती हुई थी, हमारी बात हुई थी, जहाँ पे सुशांत ने मेरा नंबर भी लिया था. और उसके बाद सुशांत हैज इनवाइटेड मी फॉर टू वॉच हिज फिल्म स्क्रीनिंग्स. सुशांत एंड कृति बोथ हैव इनवाइटेड मी टू वॉच द मूवी राब्ता एंड आई वाज प्रेजेंट देयर एंड वी वर वेरी कॉर्डियल. तो राब्ता के बारे में भी, या जब भी आपकी सुशांत से कॉन्वर्सेशन हुई, क्या आपको कभी लगा कि ये आदमी डिप्रेस है, या कभी आपको ऐसा फील हुआ? कैसी बातचीत होती थी? मैं इनफैक्ट जितना आपसे बात किया हूं ना अभी, आपसे मैंने 10 गुना ज्यादा बात किया जितना मैंने सुशांत से बात किया. ओके, तो कम बात हुई थी मतलब आपकी. तो अगर अभी आप डिप्रेस्ड हो या अगर मैं डिप्रेस्ड हूं, ना आपको पता रहेगा ना मुझे. ओके. How long did the CBI take to conduct their probe in your case, in the Jia Khan case? कितने टाइम तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी? I think about 2 years. 2 साल तक उन्होंने इन्वेस्टिगेशन करी. 2.5 years, yes. और अभी 8 साल हो गए आपके केस को, अभी भी केस चल रहा है, एक्टिव केस है, खत्म नहीं हुआ है. एक्टिव केस है. We are still on trial, but my trial is not going forward only because of Rabia Khan, who is the complainant. आप मुझे ये बताएं एक चीज, I want to ask you. As the saying goes, innocent until proven guilty. लेकिन आपके केस में आपके साथ ऐसा मर्डरर का टैग एक लगा. आपका काम अफेक्ट हुआ. I am guilty until proven innocent. हाँ, आपके लिए उल्टा. Exactly, आपके लिए उल्टा हो गया. My case has been only a media trial. It has been a harassment for me. I am a young boy. This is my last year of my 20s. Okay. I am trying to make my living in this industry because this is my dream, not because it comes to me as a silver spoon. It is my dream as a child that I wanted to be an actor. And let me say this, there are very few people who want to be associated with me or want to work with me only because of my case. And I feel it is very unfair. Justice delayed is justice not granted. So I feel justice is not granted for me. अगर मुझे ये केस में next year भी लोगों ने अगर कह दिया कि सूरज पंचोली not guilty, but I will not feel like I got justice because they have wasted 8 years of my life. But Suraj, tell me something then. In this case also, now we have a similar sort of, we're seeing a similar pattern where people have already been, convicted. I don't want to compare my case with Sushant's case or any other case. इस केस में भी आपका नाम इन्होंने जोड़ दिया है. That's what I'm asking you. किन्होंने जोड़ा है? I want to ask you one question. किन्होंने जोड़ा है? BJP leader Narayan Rane has taken your name. He said, ask Suraj Pancholi. All these people talking right now are irrelevant for me. Okay? Did Sushant's father say this? Did Sushant's sister say this? Did Sushant's brother-in-law say this? Did anyone from his family say this about me? No, because they know it is not true. I have nothing to do with it. ना कभी कोई पार्टी थी, ना मैं कभी वहाँ पे गया, ना मैं दिशा को जानता था, ना मेरा इससे कुछ लेना देना है. They are only pulling me into this because of my past.
all I want to say that I am very disturbed right now and I'm very hurt. So is my family, because this is very unfair. And it is not only unfair for me, it is also unfair for Disha's family, Disha Salyan's family. Because imagine what her mother and her father might be going through. It is very unfair. Yeah, yeah. I also want to ask you, because your name has come up in the press conference that Narayan Rane did, Dino Maurya's name came up and Aditya Thakere's name came up. What sort of relationship do you have with Aditya Thakere and Dino Maurya? Dino is a friend of mine who I meet at the gym sometimes. It's been a long time since I've met him. Aditya Thakere, sir, I have no connection. I've never interacted with him. How do you look at the future? I'm trying to stay positive right now. You know, this is as strong and as positive as I can be. I don't discuss this with my family because I know they are already in a lot of stress because of me, thinking about me all the time. In fact, my mother thinks that I'm going to harm myself, and she has spoken to me a couple of times. Even after Sushant's death, she's spoken to me saying, "Suraj, whatever it is, if in your heart, please come and talk to us. Don't be quiet." And I don't like. I'm not a very talkative person when it comes to my problems to my family, because I know they're stressed because of me. You know, I am trying to make my living in this industry, and I don't want to give up that soon, because this is my dream. It is my passion. It is what I have worked for. People think I have just gotten up out of bed and walked to a film set, which is not true. I have worked very hard, starting as an assistant director in two films. I have done my acting course. I have done my acting degree. I have done everything possible to get my first film. So this is my passion, and I'm not going to give up that easy. And these people who are talking about me should have some sense and should have some kind of humanity, because ye fair nahi hai. They are destroying my life. I don't know whether Sushant committed suicide or not. I don't know. But these people will definitely drive me to commit suicide. I would like to say that. In your case, with your personal experience, I'm asking you, कि CBI कार्रवाई जब करती है, तो क्या बिल्कुल बारीकी से हर पहलू को देखा जाता है और वो कुछ भी नहीं छोड़ते? They look at every angle possible. They look at every angle possible. So hopefully that is what's going to happen in the Sushant Singh Rajput case as well, as it happened in the Jia Khan case. But you also told us that the CBI inquiry for your case took about 2 years. That's what you told me. I think it took about 2 years. The case is still going on for 8 years. 8 years. So, or in I mean, this is my 8th year. Seventh year अभी खत्म हुआ. 7th year, 8th year मान लीजिए. और इन पूरे 7-8 सालों में सूरज पंचोली आज तक एक खूनी की ही इमेज है कि एक कातिल है. They call me a murderer. They call me a murderer. They call me a abuser. They call me all sorts of names without even one proof against me. You know how that makes me feel. Suraj, so in this case, we've seen there was a lot of talk about Bollywood mafia, these gangs, you know, the cliques in the industry who gang up on certain individuals. They stop them from getting work. Then they also tarnish their image through journalists कि आपके बारे में blind item लिखते हैं, negative publicity आपकी होती है. And people close to Sushant Singh Rajput have told me how sensitive he was. That it really mattered to him and every artist. It does get to you. Listen, though being a part of the industry, people say that you have to be thick-skinned और आपको सहना चाहिए जो भी लोग कहते. But at the end of the day, it is your subconscious mind that tells you that this is wrong and it is not fair. It has hurt me too. It has hurt social trolling has hurt millions of people. A lot of people commit suicide because of this, because it really affects them. So I would say that social trolling के पैसे भी लगते हैं कि आप पैसे फेंको और आपको उसका नाम बदनाम करना है तो आप करो. ये मेरे साथ भी हुआ है और काफी लोगों के साथ होता है. So I would not say that this does not happen, but saying that outsiders don't get a chance, that I would say no to, because Sushant himself was an outsider and he did really well.
No, I'm not saying they don't get a chance. Obviously, every outsider gets an opportunity or can get an opportunity if you have the talent. But after a certain point, you are not included in these, as they say, elite circles, or as Kangana calls it, the movie mafia, or they can impact. It's not true. It's not true. Okay. If you see the amount of star kids that have not done well, and if you see the amount of people from the outside who have done well, the majority will be that the star kids have not done well. Okay. So it is a mix and match. If you are good, you will get work. If you are not good, you will not get work. And it's not only about being a good actor. You also have to be a good you have to have the right actor. Yeah. No, not you have to be a good producer's actor. You have to be on set on time. You have to finish your work on time. You have to give proper dates. You have to be well behaved. Acting is not everything. You have to be a thorough professional. You have to be a professional. There are some people who are very good actors but have a very bad attitude. There are some people who are not that good an actor but have a decent attitude. That's why they go longer. So, Suraj, then tell me, did you know that Sushant Singh Rajput was specifically being targeted, or his image was being tarnished, or there were some gangs working against him? Had you ever heard anything? To be honest, there was so much happening to me, and there's so much happened to me that I can't look at anyone else's problem. So I'm sorry to say I didn't know about this, but I would not say social trolling is not there. Okay. I'm only talking about social trolling. I don't know about other. I'm talking about the media blind items as well. The blind items. Media blind items should be banned. Negative articles. Negative articles. The media blind items should be banned because they are not blind. They specifically tell you who the person is, and they write down about you. In the comments, they name you. The same people name you who write about you. Yeah. So blind items are hurtful. They have done it on me. They have done it on a billion of other actors. It should be stopped. As we already discussed, the CBI will now probe the case and the truth shall come out. Suraj Pancholi, बहुत-बहुत शुक्रिया आपने हमसे बात की आज तक पे और India Today पे. Thank you so much for talking to us. Thank you. Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.